अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यूनिट 2 के पार्ट 1 में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ एग्जामिनेशन की टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप इंग्लिश सब्जेक्ट में A+ ग्रेड स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपके साथ वो 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपको एग्जामिनेशन में A+ दिलवा सकती हैं। ऐसा सिर्फ सुनने से नहीं होगा बल्कि अमल करने से होगा। So stay focused, pick up your pen and note down the tips I am going to share with you to get you A+ in the examination. Tip number 1. Paper pattern is power. First of all, you should clearly understand that what paper pattern is the examiner giving you. इसको मास्टर करो, पास्ट पेपर्स को देखो, नोट डाउन करो कि कौन से सब्जेक्ट्स रिपीट होकर बार बार इम्तिहान में आते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो सिर्फ मेहनत नहीं करता बल्कि स्मार्टली प्लानिंग करता है। टिप नंबर 2, वोकैबुलरी इज वेपन। यस स्टूडेंट्स, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्पेलिंग्स की मिस्टेक से कम होते हैं। रोज़ाना हर लेसन के 10 से 15 वर्ड्स को रिवाइज करो, उनकी स्पेलिंग्स को रिवाइज करो, उनके मीनिंग्स को रिवाइज करो और इस पर कंप्लीट ग्रिप हो कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन में, क्योंकि इस तरह से आपके मार्क्स बेहतरीन पेपर करने के बावजूद भी डिडक्ट होते हैं। प्रेजेंटेशन विंस हाफ बैटल। यस स्टूडेंट्स, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपकी प्रेजेंटेशन आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, आपके पेज पर मार्जिन प्रॉपर होने चाहिए और आपकी हैंड राइटिंग नीट होनी चाहिए। अगर आप इन तीनों स्किल्स को मास्टर कर लेते हो प्रैक्टिस करने के साथ साथ, तो आपका प्रेजेंटेशन दूसरों से अलग होगा और एग्जामिनर आपकी प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस होगा। टिप नंबर 4, स्ट्रक्चर्ड आंसर इज इक्वल हाई मार्क्स। रट्टा लगाना छोड़ दो, ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज की ग्रामर को समझो और इतनी प्रैक्टिस करो कि आप आंसर को लिखते वक्त सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दो, फिर उसके मेन पॉइंट्स दो और आखिर में उसका कंक्लूजन निकालो। अगर आप इन तीनों की प्रैक्टिस कर लेते हो कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हो, फिर उसके मेन पॉइंट्स लिखते हो, फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालते हो, स्पेशली जब आप एसे राइटिंग कर रहे हो, जब आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हो, लेटर राइटिंग कर रहे हो, तो आपका आंसर इस तरह से एग्जामिनर को नजर आना चाहिए कि ये रट्टा लगाया हुआ नहीं है बल्कि स्टूडेंट ने नेचुरली अपनी एबिलिटी और अपनी वोकैबुलरी से इसको लिखा है। टिप नंबर 5, डेली ग्रामर प्रैक्टिस। यस स्टूडेंट्स, अगर आप रोजाना ग्रामर की प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ 15 से 20 मिनट आपने ये काम करना है। देखो, आपको सिर्फ पेपर क्लियर नहीं करना, आपको सिर्फ पेपर पास नहीं करना, बल्कि आपको पेपर में A+ ग्रेड हासिल करना है। और अगर आप ग्रामर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, डेली 10 से 15-20 मिनट जितना वक्त आपके पास है आप उसको निकाल कर और 15 से 20 मिनट जब प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको लाइफ टाइम बेनिफिट्स होंगे। आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो जाएगी, एग्जामिनेशन में तो आपको A+ मिलेगा ही, लेकिन आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी और आपको अंग्रेजी खुद से लिखनी आ जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। रोजाना सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करो, एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस करो और जब आप 10 से 15 मिनट रोजाना ये काम करोगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट रोजाना जब आप ये काम करोगे तो आपकी ग्रामर पर ग्रिप बन जाएगी, आपको A+ मिलेगा ही मिलेगा, कोई इससे आपको नहीं रोक सकता। सो स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी ही A+ का सीक्रेट है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है और आप मोटिवेट होकर
اب سے ان ساری چیزوں پر جو میں نے آپ کو بتائی ہیں صرف پانچ یہ ایسے ٹپس ہیں جس پر آپ اگر عمل کریں گے تو آپ کو اے پلس گریڈ گارنٹیڈ آپ کو اے پلس گریڈ آئے گا. چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. اسٹے فوکسڈ اینڈ بی ود اس. واچ دا فل ویڈیو. Types of pronouns. Personal pronoun: I, you, he, she, it, we, they, me, him, her. Possessive pronoun: یہ ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. My, your, his, her, its اور their. Reflexive pronoun: ریفلیکسو پروناؤن جو کسی ایکشن کے بعد ریٹرن اپنے سبجیکٹ پر آتے ہیں. مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف، اور سیلف، دیم سیلف. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن: دس، دیٹ، دیز، دوز. ایروگیٹو پروناؤن: which, what, whose. Indefinite pronoun: someone, anyone, everyone, something, nothing, many, few, one. Relative pronoun: who. یہ دیکھیے انٹیروگیٹو پروناؤن بھی آپ کو who, whom, which, but interrogative pronouns are used to ask questions, whereas relative pronoun are used. لیسن 1 میں پارٹ 1 میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ relative pronoun are used to join the parts of a sentence, means different clauses. یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، یہاں پر یہ جملوں کے حصوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دیٹ ہے تو آپ کہیں گے کہ آئی ہیو ریڈ دا بک دیٹ یو گیو می. میں نے کتاب پڑھ لی ہے جو تم نے مجھے دی تھی. اوکے، ہم اس کی ایگزامپلس کو ابھی ٹیکسٹ میں دیکھیں گے. پھر آگے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن: ایچ، آئدر، نائدر. اوکے، ناؤ let's go to the text so that we may see the examples of these types of pronouns. Paragraph 3, text. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, culture, and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, "We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united nation." Paragraph 3, important words. Culture, ثقافت. سینونیم ہے civilization. Tradition, روایات، heritage. سب کانٹیننٹ، بر صغیر، لینڈ ماس. آئیڈینٹی، شناخت، نیم. galvanizes، اکساتا ہے، اور اس کا سینونیم ہے motivates.
Paragraph 3, translation. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah ایک عظیم رہنما اور بڑے محب وطن تھے. He wanted to protect the values. He, آپ دیکھیں یہاں پر پرسنل پروناؤن ہے. اوکے, پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے. تھرڈ پرسن جو موجود نہیں ہوتا کسی گفتگو میں, کسی بات میں جو موجود نہیں ہوتا اسے تھرڈ پرسن بولتے ہیں. تو ہی, کیونکہ ہم قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں, وہ اس وقت موجود نہیں ہے, اس لیے ہی ریفر کرتا ہے ایسے پرسن کو جو اس گفتگو میں موجود نہ ہو, صرف اس کا ذکر کیا جا رہا ہو. اور ہی پرسنل پروناؤن ہے, اور یہ سبجیکٹو, اس کی جو سبجیکٹو فارم ہے اس میں ہے. wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار, ثقافت اور روایات کی حفاظت چاہتے تھے. He said, again, he said, he third person ہے. We must develop a sense of patriotism. We must develop, یہاں پر پھر دیکھیں we آیا, یہ فرسٹ پرسن ہے جو پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ پرسنز ہیں. آئی سنگولر کے لیے, اپنے آپ کے لیے, بات کرنے والے کے لیے. اور اگر بہت سے لوگ مل کر, 2 لوگ, 3 لوگ, 4 لوگ مل کر کوئی بات کر رہے ہوں تو اس کے لیے ہم وی کا استعمال کرتے ہیں. یہ بھی فرسٹ پرسن ہے. We must develop a sense of patriotism which galvanizes us. Patriotism which galvanizes. اب دیکھیں یہاں پر which آیا, یہ ریلیٹو پروناؤن ہے. یہ سوال کے لیے استعمال نہیں ہو رہا, بلکہ یہ اس کے سینٹینس کے پارٹس کو آپس میں جوڑ رہا ہے. جیسے which galvanizes, patriotism which galvanizes, تو یہ جوائنٹ کر رہا ہے, اس لیے یہ ریلیٹو پروناؤن ہے. us, all, us بھی پروناؤن ہے, اور یہ وی کا آبجیکٹو فارم ہے. وی کا آبجیکٹو فارم پرسنل پروناؤن میں. all into one united nation. He said, آپ نے فرمایا, we must develop a sense of patriotism. ہمیں ضرور حب الوطنی کے احساس کو بڑھانا چاہیے یا پیدا کرنا چاہیے. which galvanizes us all, جو کہ ہم سب کو اکساتا ہے into one united nation, ایک متحد قوم بننے پر. آئیے اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا, ہمیں حب الوطنی کا ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو ہم سب کو ایک متحد قوم بننے پر اکساتا ہے. پیراگراف 4, ٹیکسٹ. Patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. In the history of Pakistan, there are many instances which people laid their lives for defense of the country. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect their homeland. Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Officer Rashid Minhas,
Major Muhammad Akram, Major Shabbir Shahid, Captain Colonel Sher Khan, and Havildar Lalak Chan all embraced martyrdom while fighting bravely for their homeland. All of them were awarded Nishan-e-Haider, the largest military award given to great patriots who lay down their lives for the country. Important words. Paragraph 4. Foreign, Beruni. External, invasion, जारियत, ऑक्यूपेशन. जारियत से मुराद कि किसी मुल्क पर हमला करना और उस पर कब्जा करना. इंस्टेंसेस, वाकयात. एग्जाम्पल्स, डिफेंस, दिफा, सिक्योरिटी. embraced, ले लगाया. accepted, martyrdom, शहादत. Patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. वतनी का जज्बा हमें बैरूनी जारहियत के तनाजुर में चौकन्ना रहने पर मजबूर करता है. In the history of Pakistan, पाकिस्तान की तारीख में there are many instances, बहुत सी मिसालें हैं, when people laid their lives for defense of the country. पाकिस्तान की तारीख में कई ऐसे वाक़यात हैं जब लोगों ने अपने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानों का नजराना पेश किया. स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाब मुहावरा तर्जुमा अल्फाज को महसूस करने के लिए, उनका मज़ा लेने के लिए किया जाता है. इसलिए आप देखें, अपनी जानों का नजराना पेश किया यानी अपनी जानें कुर्बान की, अपनी जानें दी, लेकिन नजराना लगाने से ये खूबसूरत बन रहा है जुमला और इसका एक एहसास पैदा हो रहा है. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान and Havildar Lalak Jan all embraced martyrdom while fighting bravely for their homeland. Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabbir Shahid, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान ने मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया. All of them were awarded निशान. All of them, ये देखिए them एक पर्सनल प्रोनाउन है और ये दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. दे के लिए them यूज होता है. ठीक है. द लार्जेस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, जो दिया जाता है उन अजीम मुहिब वतनों को, हु ले डाउन. अगेन देखें हु आया, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ये कह रहा है जो के, यानी ये जोड़ रहा है, ज्वाइंट कर रहा है दो क्लॉजेस को, दो
parts को of a sentence, जहां से largest military award given to great patriots who lay down. तो ये who जो है ये relative pronoun है. Who lay down their lives, again their ये possessive pronoun है और they का possessive है their और they का objective है them, all of them. Okay, lives for the country. इन सब को निशाने हैदर से नवाजा गया जो मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम मुहिब्बे वतन लोगों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा फौजी एजाज है. Paragraph 5, text. Patriotism, therefore, is not just a feeling. It is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who, there the man with soul so dead, who never to himself hath said, "This is my own, my native land." Important words, paragraph 5. Spirit, jazba. Enthusiasm, enthusiasm. Inspires, हौसला अफजाई करता है. Encourages. Void, आरी यानी गुम होना, जज्बे से महरूम होना, से आरी होना. Without, soul, रूह. Inspiration, inspiration. Land, आबाई सरजमीन, मदरलैंड. Patriotism, therefore, is not just a feeling. इस हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास नहीं है. It is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. Again देखिए, it is a life spirit और फिर उसके बाद आ रहा है that. ये ज्वाइंट कर रहा है इट इज अ लाइफ स्पिरिट को और कॉन्टिन्यूसली इंस्पायर्स, यानी दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइंट कर रहा है, तो दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है. एक जिंदा जज्बा है जो किसी कौम को मुसलसल हौसला अफजाई और रहनुमाई फराहम करता है. In the words of S.W. Scott, paragraph 5, translation. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who, ये who यहाँ पर यूज हुआ, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. S.W. स्कॉट के अल्फाज में हुब्बुल वतनी के जज्बे से आरी आदमी इस जैसा है जो breathes there the man with soul so dead who never to himself has said. Again यहाँ पर ज्वाइंट कर रहा है दो पार्ट्स को. never to himself, himself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ही का. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ. तो यहां पर हिमसेल्फ यूज हुआ और ये ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. हैज सेड, दिस इज माई ओन,
یہ پھر this آیا, یہ demonstrative pronoun ہے. This اور that, those اور these, یہ demonstrative pronouns ہیں. This is my own. اب یہ my آیا, یہ I کا possessive ہے. I کا possessive my, you کا possessive your, he کا possessive his, she کا possessive her, اور he کا possessive our. تو یہاں پر I کے لیے my یوز ہوا. A native land. آئیے اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. سانس تو لیتا ہے لیکن اس کی روح اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ اس نے کبھی بھی خود سے یہ نہیں کہا کہ یہ میری اپنی سرزمین ہے. Welcome to Sip of Revision. Let's quickly revise the types of pronoun we have just finished. In the sentence, the patriots render sacrifice for the protection of these values. The pronoun these is definite pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. In the sentence, he gave them a sense of identity. The pronoun them is a personal pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun. Personal pronoun object. In the sentence, who hath never said to himself, the pronoun himself is a reflexive pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, reflexive pronoun. In the sentence, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all. The pronoun us is a reflexive pronoun, interrogative pronoun, personal pronoun object. Personal pronoun object. In the sentence, a patriot loves his country. Pronoun his is a personal pronoun, possessive pronoun, interrogative pronoun. Possessive pronoun. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. اسٹے فوکس, واچ دا فل ویڈیو. Let's do the question answers of this unit. Will you define patriotism? Patriotism is defined as love for motherland or devotion to one's country. Patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. Question 2. What are the qualities of a patriot? Sir, the qualities of a patriot are sovereignty, integrity, and honor of country. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. Patriot loves his country and always willing to sacrifice. As a citizen of Pakistan, what are your duties towards your country? Sir, as a citizen of Pakistan, it is our duty to be loyal to our country
We should be willing to sacrifice our life for the honor and prosperity of our country. We should obey all the city, state, and national laws. We should pay all our taxes and utility bills properly. Makes us stay alert in the wake of foreign invasion. Sir, it is the spirit of patriotism that makes us stay alert in the wake of foreign invasion. Students, so this is the end of our lesson. Hope you learned well, keep practicing, and let's hit A plus in the examination.